Hello and welcome. When homeopathy was discovered more than 200 years ago, our master had a name, a purpose, which was to serve humanity. But today, either to compete with the so-called modern system of medicine or to earn our bread and butter, we have far left behind the very aim and purpose for which homeopathy was once discovered. Many of us have buried the theories, principles and laws on the basis of which our system was once built. This is a sincere attempt from our end to try and excavate those buried theories, principles and laws. Our aim is not only to make the process of learning easy and effective, but interesting too. We do not intend to mount any of our theories or imaginations upon our audience, but instead we shall try our best to explain the facts and the truth that is laid in our literature in a very simple and convincing way with the aid of real-time videos, audios, multimedia clips and images. If we wish to understand the concept of homeopathy, it is very essential for us to understand the meaning of each and every aphorism from our organon of medicine. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. Now, when we read this first aphorism, it seems very easy to understand. In simple words, it means the aim of a physician should be to treat the sick, to restore him to a state of health. But unfortunately, many of us have not understood the meaning of this simple statement. If you wish to understand this aphorism, first, you should try to understand as to what Hahnemann meant by the terms sick and cure. Sick. Now, the meaning for this term is entirely different for an allopath and a homeopath. For an allopath, this term refers to anybody where physical changes can be traced, either at cellular level, tissue level, or organ level. To understand this statement better, let's listen from a patient. और ये दर्द तो जैसे हरदम मन में ऐसा रहता था कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक बार हार्ट चेक किया था, ECG किया था, PMT किया था, इको किया था, तो नॉर्मल बताया। फिर एक बार दवा लेने के बाद भी दर्द चालू था, कभी भी दुखते रहता था। दिन पहले के दिन ऐसे गिर गया मैं, अपने आप मेरे को मालूम नहीं, ऐसे बाथरूम में गया था, वापिस गिर गया। फिर उस दिन गया फिर डॉक्टर की तरफ, गिरने के बाद तो अपने आप मैं उठा थी, ऐसा गिर के था। जब होश आया तो थोड़ा मैं बोला गिर गया, फिर उठ के खड़ा हो गया, घर पे भी नहीं रहता, फिर उसी टाइम में फिर गया था। तो वहाँ पे और एक बार TMT को दोबारा उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, वो हो गया। इनको पहले पेट का किया, वो मैंने इंग्लिश को भी किया, पेट की पहले जासूस के लिए, कि वो दर्द चालू था तो उसके लिए TMT किया। और अभी ये प्रॉब्लम चालू हो गया, मैंने ब्रेका ऐसे टोटी जैसा लगता है, और थोड़ा सा काम का लोड आ गया तो मुझको नींद नहीं लगती, और घबराहट नहीं ज़्यादा आ जाती है, कोई कम ज़्यादा हो गया तो घबराहट जल्दी आ जाती है। और ये एलर्जी का प्रॉब्लम तो आपको पता है, एलर्जी सबसे ज़्यादा एलर्जी है, और पर हरदम दुखते रहता है, ऐसा पैर ऐसा शरीर में दर्द रहता है, तो वातावरण में ऐसे हो गया, टाइम पर दुखना चालू रहता है। और कुछ ठंडास नहीं होती थी, हाँ। फिर वो गैस ऐसे चढ़ती थी इधर में, तो मेरे को लगता था कि हाथ दुख रहा है मेरा, वो इधर उधर भी घुसती थी, यहाँ तक दुखता था वो अभी बराबर यहाँ पे। तो इसके वजह से मेरे को हरदम मन में रहता था कि सर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है।
संडास बाथरूम में मतलब कितने दिन के लिए? मगर जो बचपन से ये है संडास का शुरुआत तो मैं जब उसमें आया मुझे तो खर्रा वगैरह मेरे कोई शौक नहीं था। खर्रा भी नहीं खाता था। मैं 10-16 साल का 17 साल का हो गया तब तक मेरे कोई शौक नहीं था। मैं खर्रा में सुपारी में दारू में कुछ। Did he share it? ECG done thrice, TMT twice, echo and sonography 1 time each. Still got nothing to give the observed symptoms a diagnostic name? For them, since the results are all normal, they can't consider the person as being sick. But the patient himself feels something is wrong with him. For them, their treatment begins once they have made a diagnosis. Until then, they prefer to wait. Wait for the initial signs of derangement in health to become more severe. Wait for changes to occur that can be traced by physical examinations or tests. But by then, there are chances that it may be too late to reverse the changes so occurred. As a homeopath, we need to understand that it's the patient who becomes sick, not his body or any organ. If somebody is having cirrhosis of liver, we have to understand that he is sick. So, he is having a liver cirrhosis, but not the other way around. Now, in such cases, if it's only considered that his liver is sick and treated accordingly, chances are there that the very underlying cause which has resulted in the cirrhosis may now affect some other vital organ. So a patient who may have visited a hepatologist for such a condition has his GIT affected at a later stage, will go to a gastroenterologist, then maybe to a urologist, then a cardiologist, and soon roaming for years and years. So, from this first aphorism, we should clearly grasp as to what Hahnemann meant by the term sick. It means a state where the patient is not having the feeling of well-being, a state where he is experiencing some abnormal sensations, a state where he feels he is not healthy, either physically or mentally, with or without the presence of physical symptoms. Now, since we have understood the meaning of the term sick, on the basis of that, let's try to understand the meaning of the term health. It may be defined as a state wherein a person has the feeling of internal well-being, a state where he is not experiencing any abnormal sensations either mentally or physically. Now, let's hear from a patient and we shall let you decide whether the patient is sick and requires treatment. अभी आप कोई मेडिसिन्स ले रही हैं? जी, कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लिए पिछले 3 साल से। आपको याद है आपको क्या तकलीफ होती थी जिसके लिए आपने ये दवाइयाँ लेना शुरू किया था 3 साल पहले? जी, तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। फिर आपको किसने बोला ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेने को? 3 साल पहले हमने इंश्योरेंस के लिए एक हेल्थ चेकअप किया था, तो वो डॉक्टर बोले कि मुझे हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ज़्यादा है और बेहतर रहेगा अभी से कंट्रोल कर लो ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका कहना यह है कि अगर आपने वो चेकअप नहीं करवाया होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल है? जी। तो फिर आपको ये दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती? जी, पर अच्छा ही हुआ, बाद में कोई रिस्क नहीं रहेगा, क्यों चांसेस लेना। तो आपने अभी उसके बाद कितनी बार अपना कोलेस्ट्रॉल और बीपी चेक किया है? हर 6 महीने में एक बार कराती हूँ। लास्ट टाइम जब चेक करवाया था तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल कितना था आपका, याद है? जी, बीपी तो नॉर्मल बताया 130/80 और कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी कम था। पहले जो 190-195 रहता था अब 170 के आसपास है। चलिए इन वैल्यूज को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और मुझे ये बताइए कि आपको अभी कोई तकलीफ है? नहीं, वैसे तकलीफ तो कुछ नहीं। तो अगर आपको ये कभी पता ही ना चला होता कि आपका बीपी या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप किसी डॉक्टर के पास गई नहीं होती? शायद नहीं। अब जब कोई तकलीफ ही नहीं है तो कोई क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? Now, from what you have just listened, do you feel that the patient is sick and requires treatment? Right then, we shall analyze all your opinions at the end. But for now,
To add the concluding remarks to the first aphorism, it has to be clearly understood what it means by a state of being healthy and being sick. If we wish to treat a patient, removing the physical symptoms may not always help to cure the patient. A set of such physical symptoms, once removed, may reappear at a different location, either in the same form or modified, making the patient to suffer more. We hope that you have understood what the terms sick and cure means. Similarly, in our upcoming monthly editions, we shall try to explain each and every aphorism from the organon of medicine.